Minister for Road Transport and Highways, Nitin Gadkari, announced on Monday that all trucks will now be required to have air-conditioned driver compartments. Speaking at an event organized by Mahindra Logistics to acknowledge the efforts of the drivers' community, Gadkari expressed his long-standing intention to introduce air conditioners in truck driver compartments since assuming the role of minister. Initially, there were concerns about increased costs, but Gadkari stated that he had recently signed a file mandating the inclusion of air conditioning in truck driver compartments. He emphasized the importance of ensuring the well-being of truck drivers. Gadkari also mentioned that the government is taking steps to improve wayside amenities along national highways, with plans to establish 570 roadside amenities, out of which tenders for 170 have been awarded and work has commenced. Additionally, Gadkari highlighted the importance of promoting lane driving, improving road design, and providing driver training to reduce road accident fatalities. He also emphasized the need for collaboration between vehicle scrapping units and manufacturers to effectively utilize recycled materials. Listen into what Mr. Gadkari said. अगर हम बाहर के देशों में जाएंगे तो उसका टाइम बस और ट्रक चलाने वालों का टाइम रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हमारे ड्राइवर की जो केबिन्स रहती थी, वो जब मैं मंत्री बना तो मुझे लगा कि इतने 43, 44, 47 में डिग्री टेम्परेचर होता है तो ड्राइवर की हालत बहुत खराब होती है। तो मैं एयर कंडीशन केबिन के बारे में बहुत आग्रही था, पर इससे कॉस्ट बढ़ेगी ऐसा कहकर कुछ लोगों ने काफी विरोध किया। पर भी आज मैं यहां आने के पहले मैंने वो फाइल पर साइन कर दी है कि इसके बाद ट्रक की जो ड्राइवर की केबिन होगी वो ऐसी होगी, क्योंकि आखिर काम करते समय हमें उस व्यक्ति के मनस्थिति का, उसकी स्थिति का विचार करना चाहिए। मशीन भी अगर काम करती है तो उसको ग्रीस देना पड़ता है, फ्यूल डालना पड़ता है। आखिर हम इंसान हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें ये जो सेंटर फॉर ड्राइवर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, इसमें रिलेशनशिप शब्द है और रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। गुड रिलेशनशिप, अच्छे संबंध, ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस, सोशल वर्क एंड इंडस्ट्री एंड बिजनेस। आदमी कोई भी लड़ाई लड़ता है वो वेपन से नहीं लड़ता, दिल से लड़ता है, और इसलिए उससे अगर हमको काम करना है तो उससे हमारी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। For more such news and updates, subscribe to HW News English.